Make the on speakers on there. Begin. So, okay, so we started the May June 17 paper last time. We were able to do 7 questions from this, right? It's paper 2, variant 2. It's paper 2, variant 2. So let's start with this. Okay. So हमने 7 questions कर लिया था. We are going to complete the last do the last 5 of these questions today. Okay, so अब ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. It's section B. You have to answer 4 out of the 5 questions, but remember, 2017 के बाद ये पैटर्न चेंज हो गया है. आपके पेपर के अंदर कोई इस तरह से चॉइस नहीं होती है. You have to do all of the 10 or 11 questions that you get in the exam. आपको सारे करने होते हैं. Okay. Achha, let's start with this. So A, B, C, D, E is the cross section of a building. All the lengths are given in meters. Okay, so you have got this cross section given for a building. Cross section, remember हमने टनल के केस में भी किया था पहले. क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि आपको एक फेस उसका नजर आ रहा है. So this is one face that you are looking at. ठीक है. अब ये इसकी एक लेंथ होगी. So इस बिल्डिंग की आप कह सकते हो कि इस तरफ को एक तरह से एक लेंथ भी होगी और उस साइड पे जाके आपके पास उसी तरह का शेप दोबारा से आ रही होगी. Right? So it's a building that actually looks something like this. Right, इस तरह की ये बिल्डिंग होगी. That you have the exact same shape on the other end as well, और ये इस तरह से ये connected है. Right, the cross section है, that is the face that you have on both sides there. Right, just something like this. All right. Achha. Now let's see what we have to do here. We have to find DC. All the lengths are given on the diagram. They're all in meters. हमें DC calculate करना. Okay, so DC कहाँ पर है? DC is this length here. Right, ये length calculate करनी है. We've got some information given. We know that this is 15.1, this is 11, this is 9. We have this length here, that's 4, and we've got this length here, that is 6. ये length कुछ given है. इन सबको use करके we have to evaluate this DC. Okay. Now, how do you think about this? अब ये DC तो एक, अगर आप DC देखो किस figure के अंदर है, it's sort of a quadrilateral. That's a trapezium. ये आपको trapezium है. That's B, C, D, E. ये आपके पास एक trapezium बन रहा है, right? Trapezium बन रहा है. Trapezium के अंदर तो हमें नहीं पता कि कौन सी lengths किस तरह से निकालते हैं. We don't have any idea about that. So we have to be a bit smart here. कि हम किस तरह से कोई ट्रायंगल यूज कर सकते हैं जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन पता हो और उसको यूज करके हम डीसी फिगर आउट कर लें. सो वन आइडिया कुड बी दैट यू कुड ड्रॉ अ लाइन हियर. आप यहाँ पे एक लाइन बना सकते हो like this. So if you make this red line here, what it does is it makes this right angle triangle here, right? You get this right angle triangle. अब ये आपके पास hypotenuse बन गया उसका. You essentially have to find this length here. That अगर हम x कह दें इसको, अगर आप bx निकाल लोगे तो bx is going to be the same as cd, right? cd भी वही है, bx भी वही है, उसी के पैरेलल लाइन हमने ऊपर बना दी है. तब bx अगर किस तरह से निकाल लें तो क्या होगा, हमारे पास cd भी आ जाएगा. अब bx कैसे निकालें? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाई है, that is bxe, उसके अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ रहा है. और क्या हम ये लेंथ निकाल सकते हैं किसी तरह से? Think about that. We know that this total length is 6, right? The length kitni hai? 6. And we also know until here is 4. Yahan tak 4 hai. So what are you left with? We are left with 2 there. So just by drawing this one line here, that's this horizontal line, it becomes a simple case of Pythagoras. All you have to do is, aapne bx ne evaluate karna hai, we can say bx ka square plus that 2 ka square, this length here, that's going to be equal to 15.1 का स्क्वायर. ठीक है, यहां से क्या आएगा, आपके पास bx की लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो ये bx स्क्वायर देखें क्या आता है, 15.1 का स्क्वायर minus 4. What's that? That is 224.01 for me. So 224.01 और यहाँ से bx मेरे पास लेंथ आ जाती है, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट कर लूं, this turns out to be 14.97. 14.97, or I can say this is almost 15.0, right? So that's what I write here. bx वो है ना, तो bx
is going to be the same thing as DC, right? वो same दोनों same length है. This is also equal to DC. वही length आपके पास यहाँ पे DC की आ जाएगी. ठीक है? So that's 14.97. Does that make sense? Any questions on this? Any problems with this? Okay, good. Now, next it says calculate the angle EAB. The angle EAB. Okay, good. अच्छा अब जाके देखते हैं ऊपर फिगर के अंदर EAB. अच्छा E ये है, A ऊपर है, ये B है. This angle is what we need. ये angle चाहिए हमें. ठीक है? Let's call this theta. Now, which triangle is this angle in? It's in the triangle AEB. इस triangle के अंदर AEB, right? इस triangle में क्या क्या information given है हमें? 3 sides है, ठीक है? 3 sides हैं. Do we have any other angles here? Let's try to think about that. Angles हैं क्या हमारे पास यहाँ पे कोई? Angles हमारे पास नहीं है कोई, ठीक है? Angles हमारे पास कोई भी नहीं आ रहे. Okay, so we have 3 sides and 1 angle. तो हमारे पास कोई भी pair नहीं बन रहा जिसका हमें पता हो, right? We don't know any pair. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 sides से एक angle हमें cosine rule use करना पड़ेगा because we don't have a pair of an angle and a side. So we have to use the cosine rule. Now, how do we use the cosine rule? We know that a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos of a. ठीक है? अब remember इसमें जो मैंने important बात आपको बताई थी, this side that you have on the left side, उसके corresponding angle यहाँ पर होता है. तो left पे आपकी वो वाली side आएगी जो इस angle के opposite होएगी. ठीक है? अब ये angle कौन सा है? That's the theta angle. इसकी जो opposite side होएगी, that's 15.1. That's going to be on the left side there. So हमें formula लिखेंगे. We say this is 15.1 का square that is equal to the other two sides इनमें automatic नहीं करता. We've got 9 square plus 11 square minus 2 into 9 into 11 into cos of that theta that we had there. ठीक है? अब यहाँ से theta evaluate कर लेंगे. Let's take this theta term to the left side. That becomes 2 into 9 into 11 into cos of theta. Let's take that 15.1 square on the right. कई लोगों ने इस तरह में इसको directly याद किया होता है. That's okay if you remember that. I generally do not recommend memorizing a lot of stuff. आपको concept clear होना चाहिए. So that helps you with new types of questions as well. So अगर आपको simple cosine rule याद है, you can just rearrange that to get to this thing as well. So you have cos theta here. You get 9 square plus 11 square minus 15.1 square divided by 2 into 9 into 11. ये आप evaluate कर लेंगे. ठीक है? ये देख लें cos theta क्या आता है यहाँ पे. So that's 9 square plus 11 square minus 15.1 square divided by 2 divided by 9 divided by 11, and that turns out to be minus 0.131, right? ये आ रहा है ना? मैंने फुल आंसर निकाला, मैं एक बिंदु चेक कर लेता हूँ. Okay. अच्छा, let's find the angle from there. That was negative आ रहा है. जब negative आएगा इसका मतलब obtuse आपके पास आएगा. इससे सही आ रहा है. Calculator से इसको evaluate करोगे, cos inverse लेंगे इसका. You will see what you get from that. Cos inverse of this, that is 97.5 degrees. ठीक है? So that's 97.5 degrees. That's your angle EAB. Okay? That's the angle EAB. All right, let's move on. Then it says calculate the area of the cross section, right? So अभी जो पूरी चीज थी, उसने कहा था कि पूरा cross section है. ये जो पूरा आपको नजर आ रही है figure यहाँ पे, this is the whole cross section, right? अच्छा, अब वो side वाली मैं जो आपको समझाने के लिए एक figure बनाई थी. Let me just get rid of that, so we don't have that clutter. Okay. So what do you have to do? We have to find the area of this whole figure. ठीक है? अब इस क्या कर सकते हैं? You can break it down any way you want basically, right? तो आपको क्या करना है? आपके पास देखें क्या क्या चीजें आ गई already. DC आपके पास आ गया, so that's this length here. That's 14.97. You know this length, okay? And what else? We have calculated that angle EAB. That angle is now 97.5 degrees. Let's write that down there as well.
ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसको इसी तरह से निकाल लें। तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AEB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB प्लस दिस फिगर दैट्स बिलो दैट। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन ब्रेक इट इनटू दिस ट्रायंगल एंड दिस रेक्टेंगल, या फिर आप इसको डायरेक्ट ट्रेपीजियम ट्रीट कर लो, राइट, बिकॉज वी गॉट टू साइड्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ये साइड है DE, एक ये साइड है, दे आर बोथ पैरेलल, और ये इनके दरमियान में हाइट होगी, दैट्स 14.97। रिमेंबर ट्रेपीजियम की हाइट क्या होती है, it's the distance between those parallel lines, so that's 14.97 in this case. You can also deal with it like that. ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप इसको एक ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल लाइक दिस, और ये नीचे वाले रेक्टेंगल के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, और फिर आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स योर चॉइस अगेन। So what do we do? We say area of that triangle AEB plus the area of trapezium, that is BCDE. Okay, BCDE. Let's evaluate that. AEB triangle का area. दो sides है आपके पास 9 and 11, and we have the angle between them, right? So half AB sin से लगा लेते हैं इसके ऊपर. We have half into 9 into 11 into sine of that angle, that was 97.5 degrees that we evaluated in the last part. अच्छा, then the area of trapezium. Area of trapezium क्या होता है, half into sum of parallel sides. Parallel sides कौन सी हैं इसके अंदर, this 6 and this 4, we add those two sides, right, 6 and 4, so 6 plus 4 into height. Height remember क्या होती है trapezium की, trapezium की height होती है the distance between parallel sides. ये height नहीं होगी, right, height का मतलब सिर्फ vertical नहीं होगा, height है distance between parallel sides, right, so that's this thing here, this length here, right, so essentially that's the distance between parallel sides. 14.97, that's the 14.97. Okay, and you can see what you get from this. Area of triangle आ जाएगा, that's going to be 9 into 11 divided by 2 into sine of 97.5, that is 49.08 plus the other thing, that's 5 into 14.97, and that turns out to be 74.85. इन दोनों को add कर लेंगे, आपके पास total area आ जाएगा of that figure, because that's 123.9. That's the area of the cross section. All right, is this clear to everyone? Yes, sir. Yes. Okay, good. Now, a model of the building is made using this scale, 1 to 50. Right? क्या मतलब, जो लेंथ यहाँ पे 1 शो हो रही है, वो असल में जो है, सॉरी यहाँ पे नहीं, जो मॉडल के अंदर लेंथ 1 होएगी, वो असल में 50 होगी. That's the ratio 1:50. It says, what is the area of the cross section of the model? What is the area of the cross section of the model? How do you figure this out? 1:50 आपकी जो है वो है रेशियो फॉर द बिल्डिंग, यानी हर लेंथ जो है वो 50 टाइम्स है असल में. जो क्रॉस सेक्शन का एरिया हमने निकाला है, सॉरी कहाँ पे क्या, अच्छा ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग का आ रहा है. ओके, ये जो फिगर है दैट्स फॉर द बिल्डिंग, दिस फिगर इज फॉर द बिल्डिंग. ओके, दिस फिगर इज फॉर द बिल्डिंग. इसकी लेंथ जो है मीटर्स में इसलिए आपको नजर आ रही है यहाँ पे, दिस लेंथ आर द मीटर्स. अब क्या हुआ है, a model of the building is made, right, model of the building. अब अगर एक लेंथ आपकी उसके अंदर जो ऊपर हमारे पास बिल्डिंग की लेंथ थी, if there was one length that was 50, मॉडल में वो क्या होगी, मॉडल में 1 होगी. so 1 आपके मॉडल के लिए है, 50 आपकी बिल्डिंग के लिए है. ठीक है, अब बिल्डिंग का एरिया हमारे पास है, बिल्डिंग का एरिया क्या है, that is 123.9. ठीक है, अच्छा, now you have to be a bit careful here.
1:50 जो आपको दिया हुआ है, that is the ratio of the lengths. That is the ratio of the lengths. Areas की रेशियो क्या होगी? Areas की रेशियो क्या होगी? मॉडल और बिल्डिंग दे आर सिमिलर फिगर्स, राइट? जो आपकी बिल्डिंग की शेप है, एग्जैक्टली वही शेप आपके मॉडल की भी होगी, सो दे आर सिमिलर फिगर्स. अगर लेंस की रेशियो ये है 1:50, तो एरियाज की रेशियो क्या होगी? इट्स गोइंग टू बी 1 स्क्वायर and 50 का square. That is the ratio of the areas. So that's 1 to 2500. That is the ratio of the areas. ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, अब ये हमारे पास होगी रेशियो ऑफ एरियाज. अब बिल्डिंग का हमारे पास एरिया गिवन है, राइट? बिल्डिंग का एरिया गिवन है, दैट इज 123.9 मीटर स्क्वायर. What is this area for the model? Let's figure that out first. Let's figure out this area first. Right? We are talking about meters right now. अभी हम meters की बात करें. अच्छा, scale में it doesn't matter, right? Scale में कुछ भी नहीं दिया हुआ. It's 1 to 50. आप unit कोई भी यूज कर लो. यहाँ पे तो कुछ भी unit नहीं है, तो 1 meter to 50 meters, or you can say 1 centimeter to 50 centimeters. That's the same thing. It's just the ratio. Unit कोई भी हो वहाँ पे, doesn't matter, right? वहाँ पे कोई भी unit यूज कर सकते हो, and it will still hold. इसमें scale में इस केस के अंदर जब आपके पास रेशियो के अंदर कोई यूनिट नहीं होता. सर द क्लास विल एंड एट 10. कौन सी लेंथ? अच्छा, the class will end at 10. Around 10, so around 10:10 you can say, around 10:10. Okay. All right. Acha, so what is the cross section of this model? We find this length here first. Okay, हमारे पास length क्या आती है? ये हमारे पास area of the model क्या आता है? In meter square. Let's evaluate that. Ratios हमारे पास आ गई. Let's cross multiply. What do we get? We get 123.9. That is equal to 2500 times x. X की value क्या आती है यहाँ से? 13.9 divided by 2500. This turns out to be 0.04957 meters square. ये हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर. ठीक है. Why did we take the square? So why did we take the square? Ratio तो दी हुई थी, that was for the lengths. जब भी आपके पास स्केल दिया होता है, वो स्केल होता है लेंथ्स का. तो आपके पास एक मॉडल की लेंथ है, that is 1. एक आपके पास बिल्डिंग की लेंथ है, that is 50. So 1 जो मॉडल में होगा वो 50 बिल्डिंग में रिप्रेजेंट कर रहा होगा. हमें क्या निकालने हैं? हमें एरियाज निकालने हैं, राइट? जब remember that similar figures वाला formula, if you have if you have to find the ratio of the areas, तो जो भी लेंस की रेशियो होती थी उसको हम स्क्वायर करते हैं, राइट? सिमिलर फिगर्स के अंदर ये होता है, जो लेंस की रेशियो होती है उसका स्क्वायर जो होता है, दैट इज द एरियाज की रेशियो. सिंस वी आर dealing with the area here and these are similar figures because मॉडल उसी बिल्डिंग का है, they have exactly the same shape, so they are similar figures. We use that concept कि जब लेंस की रेशियो 1:50 है तो बिल्डिंग्स जो एरिया की रेशियो होगी वो उनका स्क्वायर होगी. Is that okay? All right. अच्छा, so ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ गया. सिमिलर फिगर्स में ये होता है ना कि सिमिलर फिगर्स में ये होता है ना कि मतलब जिसकी हाइट में अगर डिफरेंस है तो मतलब उसको हम स्क्वायर करते हैं, जिनकी अगर हाइट सेम है ना तो उनको स्क्वायर नहीं करते. तो इसमें भी यही सीन हुआ है ना कि बिल्डिंग में तो हम उनको स्क्वायर करते हैं. देखें, जो आप दूसरी बात कर रहे हो ना, वो सिमिलर फिगर्स होते ही नहीं है. आप बात कर रहे हो दो फिगर्स इस तरह की हैं कि यू गॉट दिस ट्रायंगल, ठीक है? आपने दूसरी आपने एग्जांपल दी, आपके पास एक ये ट्रायंगल है और एक उसके अंदर एक लाइन लगी हुई है, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है? आप कह रहे हो सेम हाइट इनकी है दोनों ट्रायंगल्स की, सो यू गॉट ए बी सी एंड डी. तो इसमें ए बी डी और BCD इन दोनों की सेम हाइट आ रही है. Is that what you're referring to? किसकी बात कर रहे हो आप? यस सर. एक और वो सिमिलर फिगर्स की वो ट्रायंगल होती है ना, मैं बात कर रहा हूँ वो तकरीबन
सर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। ये सिमिलर फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की ट्रायंगल जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, these are similar figures, ठीक है, ये सिमिलर फिगर्स हैं। लेफ्ट पे नजर आ रही है सिमिलर फिगर्स हैं ही नहीं, ये सिमिलर फिगर्स नहीं है। ये इसमें दूसरी एक चीज अप्लाई होती है, दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि इन दोनों की हाइट कॉमन है, राइट, इन दोनों की हाइट कॉमन है। एबीडी फिगर उसकी भी उतनी ही हाइट है, उसकी ट्रायंगल की भी उतनी हाइट है, और बीसीडी फिगर की भी उतनी ही हाइट है। उसमें हम कहते थे दोनों के जो एरियाज की रेशियो होगी दैट्स जस्ट द रेशियोज ऑफ देयर बेसेस, राइट, सो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो सिमिलर फिगर्स नहीं होती। सिमिलर फिगर जब भी होती है आपके पास, उसमें यही चीज अप्लाई होती है दैट द रेशियोज ऑफ द एरियाज इज गोइंग टू बी द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स। तो उसमें वही चीज अप्लाई होगी जब भी आपको सिमिलर फिगर्स होगी। अच्छा, हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ गया 0.0495, ये मीटर स्क्वायर में क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल सारी लेंस मीटर में थी ना। ओके सर। तो हमारे पास रिजल्ट मीटर्स में आया है, उसने हमसे मांगे स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, राइट। हमारे पास मीटर स्क्वायर में आ गया यूजिंग रेशियोज। अब हमें इसको स्क्वायर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट डू वी डू फॉर दैट? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, राइट। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? 100 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे? 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, and that will turn out to be 495.7 centimeters square, and that is the area of the model. 495.7 centimeters square. Does this make sense? Is this clear to everyone? Yes sir. Okay, good. Let's move on. So a random number x is generated where x सर is ये मैंने g सर g सर ये मैंने पहले किया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन ना सर ये समझ नहीं आ रही जिस तरह किया हुआ है। ये पहले ऐसे किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर लिया और उसके आगे 0.5 मीटर लिख के आगे उसका स्क्वायर कर लिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है इस साइड पे, इस तरफ लिखा हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर। उसके बाद x इज इक्वल टू 123 पॉइंट जो था हमारा 5 वाला 123.9, और आगे लिखा है x इज इक्वल टू 123.9 ओवर 0.25 इज इक्वल टू 496। आंसर मतलब सेम है दोनों के, लेकिन वर्किंग नहीं समझ आ रही वो। मैं इसको आपको आपने पिक्चर इसको भेजूंगा सर पहले तो नहीं, व्हाट्सएप पे। इसको आपने हो सकता है पहले से कन्वर्ट कर लिया, और इस लेंथ को आपने, इस एरिया को आपने अगर पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। नहीं सर ये पता क्या किया, मेरे ख्याल से ये ना 2500 को कन्वर्ट कर लिया हुआ है पहले से ही 0.25 में, और आगे लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर में। नहीं, वो नहीं कर सकते, वो तो नहीं कर सकते, बिकॉज ये इसमें तो यूनिट है ही नहीं ना। ये तो यूनिटलेस चीज है। ये मीटर में भी वही होएगा, मीटर स्क्वायर में भी वही होएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी वही होगा। इससे तो कोई यूनिट मैटर नहीं करता, रेशियो तो वही रहेगी। सर मैं आपको भेजूंगा सर पिक्चर्स की व्हाट्सएप पे, फिर बताइएगा सर ये क्या है मसला। ठीक है सर। Okay, sure. अच्छा, let's move on. So a random number x is generated where x is any real number. ठीक है, x is any random number. ठीक है. Now manual adds 2 to x. अच्छा, उसने x में 2 add कर दिया. He subtracts x from 10. Manual then multiplies these two results to give his number y. Show that y is equal to this thing. लेकिन क्या कर रहा है वो? He's adding 2 to x, that means x plus 2. Then he's subtracting x from 10. 10 में से x subtract कर रहा है, so that's 10 minus x. He then multiplies these two numbers, इनको multiply कर दें, तो आपको y आ जाएगा. So that means y is basically x plus 2. So y is basically x plus 2 into 10 minus x. ठीक है? इसको आप simplify कर लोगे, you will get nx plus 20 minus x square and minus 2x, and that gives you
20 minus 8x, 20 plus 8x minus x square. So y is equal to that. ठीक है, जो दो numbers लिखे हुए थे उसको हमने इस expression में लिख लिया, then we just multiplied the two numbers. Okay. Then it says on the grid opposite, draw the graph for this. So graph draw करना है for x between 0 and 10. 4 points have already been plotted for you. Okay, let's go there. Next page पे उसने वो किया हुआ है, उसने 4 points पहले से plot कर दिए, ठीक है, और आपको बाकी plot करने हैं वहाँ पे. 4 points are already plotted. Okay, so इस केस के अंदर उसने हमें as such कोई टेबल नहीं दिया हुआ, राइट? तो इसलिए इसके मार्क्स भी ज्यादा हैं कि आपको टेबल खुद से बनाना है. ठीक है, 0 से लेकर 10 तक x की कौन कौन सी वैल्यूज यूज की हुई हैं उन्होंने? They've used 0 and 1 and then 9 and 10. इनके दरमियान वाली वैल्यूज आपको खुद से evaluate करनी है. ठीक है, so let's do that here. So rather than doing that there, let's do it on the next page ताकि हमें यहाँ पे visible भी हो जाए वो. While we are plotting, so we've got x and we've got y. यहाँ पे कुछ values ले लेते हैं दोनों की. ठीक है, 0 और 1 तो उसने पहले से लिया हुआ है. ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे उससे आगे 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, इन पे जल्दी से इवैल्यूएट कर लेंगे कैलकुलेटर के अंदर. कैलकुलेटर में हम ये डालेंगे वैल्यू 20 plus 8x minus x square. ठीक है, 20 plus 8x minus x square. इसके अंदर ये वैल्यूज इनपुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है. कैलकुलेटर में आप क्या करोगे, आप ये डाल दोगे 20 plus 8 then bracket and bracket closed minus bracket and then bracket का square. ये चीज आप कैलकुलेटर में डालोगे और फिर आप क्या करोगे, इन वैल्यूज को बस चेंज करते जाओगे. इधर 2 कर दोगे, तब उसको चेंज करके इसको 3 कर दोगे, इसको 4 कर दोगे एंड सो ऑन. ठीक है, आप ये कर सकते हो. फिर आप लोगों में से जिन लोगों को टेबल फंक्शन यूज करना आता है कैलकुलेटर का, आप वो भी यूज कर सकते हो. दैट विल डू मेक दिस टेबल फॉर यू ऑटोमेटिकली, राइट? तो यू कैन आल्सो डू दैट. अच्छा, आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करनी है, देखते हैं क्या आता है. सो लेट मी डू इट ऑन माय एंड एज वेल. यू कैन टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग. 20 plus 8 into 2 minus 2 ka square. Okay, all right, so I'm getting 32. Then for 3 I'm getting 35. On 4 I have 36. 5 pe I got 35 again. 6 is 32 again. So there seems to be that pattern here. Remember ये quadratic curve है ना, तो ये symmetrical भी है. तो वही numbers जो हमारे पास पहले आ रहे थे वापस आना शुरू हो गए उसके ऊपर. हम 7 पे देखते हैं. 7 पे we're getting 27 and then on 8 we get 20. ठीक है, या आपके पास numbers आगे इनको plot कर दें. 2 and 32. Okay. 2 के ऊपर 32, that's going to be around here. Be careful, ये scale क्या लिया हुआ है, 10 boxes 5 को represent कर रहे हैं, यानी कि एक छोटा box जो है, या आप कह सकते हैं दो छोटे box एक को represent करते हैं. These represent 1 unit, 2 boxes, right? So 1 2, that's 32 here. अच्छा, 3 by 35, 3 and 35, that's going to be here. 436, 535, 632, 727, and then 820. You got these points plotted? आपने सिर्फ क्या करना है, इनको curve से join कर देना है. Try to make it as smooth as you can. So let's do it. And that will be your quadratic curve there.
So again, as I always recommend, you should be using a pencil for this, because it's not going to come out well the very first time. You'll have to do some iterations like I'm doing here. Digital में और भी ज़्यादा करना पड़ता है. Let me try a few times and see if it works. कोशिश करने corners नहीं बने आपके पास आपके figure के ऊपर. I'm sorry about it. So it's taking some time. My pen angle is not coming out well. Notebook में आप क्या कर सकते हो, उसमें ना आप उसको rotate कर लेते हो, and that helps your drawing. So let me take it forward like that. Okay, so मेरे pad में थोड़ा सा है कि it slides a bit. So let me try again. Okay, so it's not coming out very well. So आप pencil से कर रहे होगे, and hopefully it will be easier than it has been here. So this is what it looks like roughly. But of course, you should try it's as smooth as possible. So I don't like this part here. I'll just redraw it if it works out well. Like this. Okay. So this is what we have. ये आपके पास curve बन जाएगी. ठीक है. Then you go on. It says Jolene multiplies the random number x by 5 and then adds 2 to her given number, 2 to give her number z. So she multiplies x by 5. Okay, so that means 5x. And then adds 2 to give her number z. इसमें क्या करना है फिर? 2 add कर देना है. To give what number? To give this number, that's z. This is another number now that we have. That's z equal to 5x plus 2. Okay, z equal to 5x plus 2. Achha. Then it says calculate the possible values of x when Manuel's number y and Jolene's number z are the same. उसने कहा calculate. So ये graphically नहीं करना. उसने कहा calculate करना है तो आपको calculate ही करना है. y क्या था? Y was equal to y, that was 20 plus 8x minus x square. 20 plus 8x minus x square. ठीक है. Yes, so we have actually skipped that part. I just noticed, Manahil, we will be going back to that. Let's complete this first. So z is equal to 5x plus 2. Y is equal to 20 plus 8x minus x square. Okay. So calculate the possible values of x and Manuel's number and Jolene's number. So y and z are the same. जब ये दोनों equal होंगे, क्या मतलब दोनों को equate कर दो. 5x plus 2 equal to 20 plus 8x minus x squared. You just equate those two numbers. Y equals x, right? Y equals z. So, और यहाँ से आप इसको evaluate कर, it's a quadratic equation. X square comes on the left side, 5x minus 8x, it becomes minus 3x, 2 minus 20, that becomes minus 18, equal to 0. Okay, you can see if you can use factorization here, which we can, yes, we can. So minus xx plus 3x minus 18 equal to 0. We get x into x minus 6 plus 3 into x minus 6, that's equal to 0. So x plus 3 into x minus 6, that's equal to 0. X is either equal to minus 3 or it's equal to 6. ये हमारे पास x की दो possible values यहाँ पर आ गई. ठीक है, minus 3 or 6. We just equated those two numbers. अच्छा, let's go back. We skipped a couple of parts there. So, in fact, one part there, part C हमने miss कर दिया. अच्छा, ये कहते हैं, on the same grid, draw a suitable line to find the value of Manuel's number y when it is the same as the random number x. Okay, that is when y is the same as x. What does that mean mathematically? Y being the same as x, it means y is equal to x, right? So draw a suitable line to find the value of y when it is the same as x.
That means y is equal to x. We have to draw this line y equal to x on our graph. और देखेंगे जहाँ पे intersect करेगी उस curve को, that will be the suitable value for the Manuel's number y. Right? So y equals x draw करते हैं इस line के ऊपर, इस graph के ऊपर. Y equals x क्या मतलब है? सारे coordinates equal होंगे. Right? So 5x है तो 5y होगा, 10x है तो 10y होगा, and so on. So you can draw some plot some points there. एक तो 0 0 होएगा, 0 से pass करेगी, ठीक है? Then 5 5, that's going to be here. Then 10 10, that's going to be here. ठीक है, ये आपकी line बनेगी उस केस के अंदर. So let's draw that line first. Let's draw this line. So it's going to look like this. This is a straight line, okay? Now, if you look at a graph, it does not really intersect the graph at any point. So what we have to do is we have to extend it. अच्छा हमने वो एक point miss कर दिया था नीचे. वो 10 तक जा रहा है. So we just extend it until 10. ये नीचे भी एक point था. Let's extend that. So when we extend that graph there until 10, let's see what we get from that. Again, so you have to be a bit careful here. यहाँ पे आपकी accuracy थोड़ी सी अच्छी हो, तो यहाँ पे आपने point of intersection देखना है. इसके साथ, so this is what it roughly looks like. सर आवाज आ रही है मेरी? जी अलीशा अब आ रही है. सर ये मेरा सर नेट बहुत तंग कर रहा है सर. एकदम से मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ और फिर एकदम से सारा कुछ गायब हो जाता है. अच्छा चलें, it's okay. I will be trying कि मैं इसकी recordings भी जल्दी upload कर दूँ. Again, I have some internet issue where I am right now. But I'll try के I post all of them sometime soon. Okay. So y equals x line draw कर ली हमने वहाँ पे. ठीक है, that's this line y equals x. ये line कहाँ पे intersect करती है उस graph को? It intersects at this point here. ठीक है, उसने क्या कहा था? अगर हम उसमें देखें, draw a suitable line to find the value of Manuel's number y when it is the same as the random number x. ठीक है, that's this value here. ये value. अब यहाँ पे अब इसको read कर लें, आपके पास क्या value आती है? This is around 9.2. ठीक है, उसने y पूछा था, तो basically y और x जब same है, तो जो आपके पास वहां पे x एक्सिस पे आ रहा होगा, रफली आपके पास वही जो है वो y एक्सिस पे भी आ रहा होगा. लेकिन वहां पे मसला क्या है, y एक्सिस पे इतनी एक्यूरेसी हमारी अच्छी नहीं होगी. When we go there, कहीं पे इधर आएगा तो वहां से रीड करना मुश्किल है, तो हम x साइड से रीड कर लेते हैं उसको. It's around 9.2 here. ठीक है, तो that is where. सर इसका क्या मतलब हुआ? When it is the same as the random number x. सर इसका क्या मतलब हुआ? Okay, so what does it say? I think आप उस टाइम पे नहीं थे. Draw a suitable line to find the value of y. Right? इससे उसकी explanation दी है y की represent क्या कर रहा है? This is Manuel's number. Find the value of y when it is the same as x. When y is the same as x. क्या मतलब when y is equal to x? Right? तो अपने ग्राफ पे वो जगह पे जाकर वो पॉइंट देखना है जहाँ पे y is equal to x. आपने क्या किया, y equal to x line आपने ड्रॉ कर दी उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर. That's what we did there. We drew that line. That was the line y equal to x. वो हमने वहाँ पे ड्रॉ की. And then we saw वहाँ से उसका yes. जो उसका बन रहा है x कोऑर्डिनेट को बता दिया. Yes. So essentially आपको चाहिए तो y कोऑर्डिनेट था, लेकिन y कोऑर्डिनेट पे it's very hard to read क्योंकि वो स्केल बहुत छोटा है यहाँ पे. तो अराउंड 9 आ रहा था, लेकिन x एक्सिस पे स्केल थोड़ा बड़ा है, तो it's easier to read there. हमने यहाँ पे देखा it's actually 9.2 this value. So we have this 9.2 here and we write that value there, and part C that's supposed to be 9.2. Okay, any questions on this? Yes, sir. Okay, sir. All right, let's move on. So this was question number 9, right? Okay, let's look at question number 10 then. So it seems to be something related to bearing. Okay, the diagram shows the position of point A. So we've got that point A there.
point B is 8 centimeters on a bearing of, it's 8 centimeters from A on a bearing of 62 degrees. अच्छा, ये A point है, B एक point है कहीं पे हमारे पास. अभी you'll have to help me with this. I'll have to help you out with this because यहाँ पे मैं accurate drawing उस तरह से नहीं कर सकूंगा. So point B is 8 centimeters from A on a bearing of 62 degrees. आपने करना क्या है? आपने ये एंगल मेजर करना है. This angle should be 62 degrees. ठीक है, A से जो bearing है that is 62, यानी कि नॉर्थ से clockwise this angle should be 62 degrees. इस एंगल के ऊपर आपने क्या करना है? एक लाइन बना देनी है. You will use a ruler to draw a straight line there, which may look something like this. आप ये straight line बना दोगे 62 degrees के एंगल के ऊपर. ठीक है, और फिर आप उसको रूलर से मेजर कर लोगे wherever it reaches 8 centimeters. Let's say ये वो पॉइंट यहाँ पर होता तो you just use that much of the line, बाकी आप बस उसको वहां से erase कर दें. ये आपका 8 centimeters let's say यहाँ तक पूरा हो गया. आप रूलर से मेजर कर लोगे. That's your point B there. Is that okay? हो जाएगा ये? ये हो जाएगा? सर हो जाएगा. ठीक है, एंगल रिमेंबर कहाँ से मेजर करना है? मुझे एक मिनट ये बताइएगा. Your protector is going to be like this. इस तरह से आप प्लेस करोगे अपने प्रोटेक्टर को. 0 यहाँ पर आना चाहिए उसका और ये शेप होनी चाहिए. फिर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से एंगल मेजर करना शुरू करोगे and this angle should be 62 degrees. Okay, so that's how you will measure this on a protector. जी अब्दुल्ला. इसमें मैंने यही पूछना था. Yeah. Okay. Now, so I'm assuming you've drawn this. Okay, उसने कहा find label B. अच्छा, एक और भी point है C. Let's look at C now. So point C is 6.5 centimeters from A on a bearing of 194 degrees. Okay, now think about this. 194 degrees. अब ऊपर से start करेंगे. यहाँ तक 90 हो गया. फिर दोबारा D से मेजर करके ये 180 वहाँ हो पे गया. 180. यहाँ तक तो 180 हो जाएगा. यहाँ से आपको कितना आगे जाना है? 14 degrees. तो basically आप क्या करोगे? आप ये 14 degrees एंगल यहाँ से मेजर करोगे नीचे वाली साइड से. You will draw a line here again. That will look like this. That has the length 6.5 centimeters. वहां से 6.5 centimeters की लाइन ड्रॉ कर दोगे and you say here this is 6.5. ठीक है. Now आपने यहाँ पे कैसे मेजर करोगे? एंगल आप प्रोटेक्टर के ऊपर तो 180 से ज्यादा नहीं कर सकते हो. अगर आप इसको इस साइड पे रखोगे तो यहाँ पे आके तो आपका प्रोटेक्टर खत्म हो जाएगा. What do you do in this case? This is 180 and you know we have to go until 194. आपके प्रोटेक्टर पे तो 180 तक होता है. सिर्फ 180 से ऊपर आप जा नहीं सकते हो. तो आप क्या करोगे? आपने वो कर लिया जब 180 तक आपने कर लिया, उसके बाद 14 आपको और मेजर करना है, राइट? तो आप सिर्फ 14 ही मेजर करोगे. यू विल प्लेस योर प्रोटेक्टर लाइक दिस. सर एक दफा D का उस तरफ को मूव करके कर लेंगे, एक तरफ इस तरफ रख लेंगे जब ये 180 हो जाएगा पूरा. 180 पे तो आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है. आपको पता है वर्टिकल है, वो तो बस इससे नीचे आप एक्सटेंड कर दोगे. दैट्स जस्ट 180. आपको प्रोटेक्टर से मेजर करने की जरूरत नहीं है ना उसकी. काम करने की जरूरत नहीं है. आपने बस इस लाइन को एक्सटेंड कर देना नीचे. जो ऊपर वाला नॉर्थ है उसको नीचे एक्सटेंड कर दो रूलर रख के, और इस लाइन से फिर आपने ये 14 डिग्रीज मेजर कर लेना है लेफ्ट साइड से इस तरह से. ओके सर आगे समझ कि सर सबसे पहले एक दफा D इस तरफ का मुंह रख के कर लिया, यहाँ से 180 पूरा हो गया, जब इधर फिर इधर को मुंह करके कर लिया, और यहाँ से 180 को पूरा मेजर कर करने लिया, की ऐसे जरूरत नहीं है ना. 180 को मेजर करने की जरूरत नहीं है. हाँ वही 180 सर, मतलब एक लाइन लगा लें सिर्फ हम. जी, बस एक लाइन लगा लोगे और फिर आप यहाँ से 14 डिग्रीज मेजर कर लोगे. ओके अच्छा, so we've got this now.
let's see what we've been asked about after this. क्या हमने लाइंस बना ली यहाँ पे? ठीक है, सर कल कर लें, सॉरी सर बाकी सारा सर कल कर लें। क्यों लेट हो गया? सर वो नहीं सर, लेट तो नहीं, मेरे घर सर गेस्ट आए हुए हैं ना, तो उसकी वजह से जरा थोड़ा। अच्छा, I actually announced at the start मैंने अभी थोड़ा सा भी इशू है, I'm traveling and I would not have reliable internet for the next 3-4 days. तो उसकी वजह से ना मेरा थोड़ा सा मसला आएगा कि I might not be able to take regular classes and this time, तो I would want कि अभी मेरे पास इंटरनेट आ रहा है, तो I would just want to complete this. अब मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप इसको देख सकते हो। और फिर हमारा क्या होगा, so once I am back in Lahore, what we would be doing is कि हमारी पे 6 days a week classes होंगी, ठीक है? And as we get closer to the exam, it might become all days as well. ठीक है, to compensate for this time. Okay, so I would just want to ओके सर, I would just want to go ahead and complete this, and I'll try as soon as I can. I upload all those recordings as well, ताकि you have access to them as well. Okay. ओके सर, सर आई विल सी द रिकॉर्डिंग्स। Okay, sure. All right. अच्छा, ये हमारे पास B और C points आ गए। अच्छा, label कर दिया हमने। Now point D is the point on BC, that is the shortest distance from A. अच्छा, BC के ऊपर ही आता है कहीं पे। अच्छा, BC क्या है? Let's join those 2 points, B and C. This is the line BC. Okay. This is the line BC. Now, D is a point on BC that is the shortest distance from A. Shortest distance from A. क्या मतलब? A से कोई ऐसा point इस लाइन पे हमने ड्रॉ करना है BC के ऊपर, जो इस BC के ऊपर कोई ऐसा point जिसका A से distance shortest हो. How do you find that point? A is the shortest distance to this line, to the line BC. Remember, short distance between a point and a line क्या होता है? उस point से हम perpendicular बनाते हैं to that line. Shortest distance between a point and a line, it's always perpendicular distance like this. We make a perpendicular here, and this point here is going to be the point B. Okay? तो आप क्या करोगे? अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे और आप प्रोटेक्टर को मूव करते जाओगे। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा प्रोटेक्टर, दिस इज द 90 डिग्रीज, अब उसको आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट राइट मूव करते जाओ, नीचे नीचे करते करते आप यहाँ पे इस पॉइंट पर आ गए कि आपका जो ए था वो बिल्कुल यहाँ पे 90 पे आ गया, जो नीचे पॉइंट आ रहा होगा दैट विल बी योर पॉइंट डी। ओके, सो आपने ए से 90 डिग्रीज की लाइन बना देनी है इस लाइन बीसी के ऊपर, एंड दैट विल गिव यू योर पॉइंट डी। इज दैट ओके? Yes. So then it says measure AD. AD आपने measure करना है, okay? AD measure करना है. Now I can't do it here, so one of you, if you can give me a number. AD अगर आपने draw कर लिया है, AD length क्या आती है? ये आप measure करेंगे तो let me just check. It should be around 2.9 centimeters. 2.9 के दरम्यान में होनी चाहिए। मेरी 2.8 है सर। Yeah, 2.8 is fine. 2.8 is fine. So इसकी range जो मुझे नजर आ रही है, yeah, so 2.7 से 3.1 तक it's acceptable. So that's fine. 2.9 जो है वो almost accurate होगी। इसी तरह से अच्छा वो next क्या कहता है? By taking measurements, find the ratio CD and DB. CD ratio DB आपको figure out करनी है measurements लेके, ठीक है? आप क्या करोगे? आप give your answer in the form 1:n. आप ये measure करेंगे दोनों लेंथ, CD देखेंगे क्या आता है, ठीक है? CD लेंथ देख लें क्या आता है, क्या आती है, और आप DB लेंथ देख लें क्या आती है। Just measure those lengths. CD और DB की लेंथ बताते हैं मुझे।
CD और DB की लेंथ. अच्छा, so I'm just checking. CD should be around 1.25 or CD. CD क्या है? CD should be around 5.7, 5.7, 5.8 के आसपास होना चाहिए. और फिर जो आपका DB है, that should be around 7.5. या आप लेंस मेजर करोगे अपने फिगर के ऊपर, या आपके पास इस तरह की कोई लेंस आएंगी ऑलमोस्ट 7.5, 5.7 and 7.5 CD and DB. उसने क्या कहा है, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1:n, यानी कि 1 होना चाहिए और दूसरी साइड पे n होना चाहिए. So what do we do? We say this is 5.7. This ratio here is 5.7 ratio 7.5. ठीक है, अपने 1:n में करना है, दोनों साइड्स को 5.7 से डिवाइड कर दें. We get 1:7.5 over 5.7. What does that give us? That gives us 1.3 almost. 1.31. 1.31, yeah, 1.32. So that's what you get. So 1:1.32. So this is going to be 1.32 there. ठीक है, आप देख लोगे अपने आपके पास क्या आता है. So इसकी range is from 1.2 to 1.4. इसके दरम्यान में कहीं पे हो सकता है. ठीक है, so that says the area of the triangle ADB is W. ADB. Okay, so this triangle here has area equal to W. Yes, आपको बताया हुआ है. Giving your answer in terms of W, find the area of triangle ADC. So ADC find करना है. ADC क्या है? ADC is this triangle on the other side. ये दूसरी साइड पे triangle है. ठीक है, ये आपको फिगर आउट करनी है कि इसका एरिया कितना आएगा. Now, what type of a figure is this? Are they similar figures? Are these figures similar? Are these triangles similar? जो ऊपर वाली triangle है और नीचे वाली, अगर I were to shade that blue, are these triangles similar to each other? What do you think? They're not similar, right? They're not similar because we don't know whether their angles are all equal. In fact, they're not equal because we know for sure कि ये दोनों तो 90 हैं, ठीक है, लेकिन जो बाकी angles है, they're not equal because the length is different है, BD different है, DC different है, ऊपर वाली length different है, दरम्यान में एक length common है, right? एक equal length है, बाकी length different है. So they're not similar figures. These figures are not similar. So that much you understand. Yes, so they have common height. Both of these figures have common height. Height उनकी common है. जो AD है, अगर आप इस AD को देखो, this height here, यही height दोनों triangles की है. दोनों triangles की अगर perpendicular height देखो, इस base के साथ नीचे वाली अगर आपकी base हो, ये AD base, CD base नीचे वाले triangle की, DB base ऊपर वाले triangle की, तो आपकी height क्या बनती है दोनों cases के अंदर? Height is AD. So they have common height. जब common height होती है तो areas की ratio क्या होती है? वो bases की area की ratio होती है. So area of triangle ADB divided by area. चलो find दूसरा करना है तो उसको ऊपर रख लेते हैं. चले, area of triangle ADC divided by the area of triangle ADB is just the area, is just the ratio of their bases. ADC की base क्या है? ADC की base is DC और ABD की base क्या है? BD. That's or DB. That's the base. हम क्या use कर रहे हैं? We're using A1 over A2 equals B1 over B2. When do we use this? When we have common height. सिर्फ तब use कर सकते हैं जब height common होती है, and that's what we're using here. ठीक है, अब इसमें से DC over DB तो आपको पता है, पिछले पार्ट में ये तो निकलवाया था उसने आपसे, है ना? So वो आप यहाँ पे use कर लोगे. We say area of ADC
that is what we have to figure out, right? So area of triangle ADC, that's what you have to figure out, divided by W, that's equal to DC over DB. What's that? That's going to be 1 over 1.32. यहाँ से क्या आएगा, आपके पास ये इसको सब्जेक्ट बना लें, W दूसरी साइड पे चला जाएगा, and you can see what you get from that. So area of ADC is going to be area of triangle ADC is going to be W over 1.32. ये आपके पास नंबर आ जाएगा, कोई कैलकुलेटर से देख लें. That turns out to be 0.76 for me. 0.76 W. That's the area of the triangle. Achha, now the question is, can we use AC and AB? No, we can't do that. AC और AB नहीं use कर सकते. Bases use करते हैं. Common height कौन सी है? Common height is this one, AD. AD common height है किस base के साथ? Height ये है ना, remember base और perpendicular हमेशा, base और height जो है वो हमेशा एक दूसरे के perpendicular होते हैं. If this is the height, only this side can be the base. ऊपर वाली side base नहीं हो सकती, तो ये height ये नहीं होगी. जो common height है उसके corresponding जो bases हैं उन्हीं को आप use कर सकते हो. So bases are CD and DB. We can't use AC and CB. Okay, so this is not similar triangles. यहाँ हमारे पास ratio जो होती है वो basis की ratio आ रही होती है यहाँ पे. Okay, so we get 0.76 W from there. So then you have this locus question. The diagram shows the positions of A, E, and F. Construct and change the region inside triangle AEF that is less than 6 centimeters from E. So a certain distance from a point, 6 centimeters from E. Fixed distance. Sorry, circle, yes, circular arc. So E पे आप क्या करोगे, 6 centimeters का circle बना दोगे. E पे 6 centimeters का circle बना दोगे. ठीक है, अब again I can't draw that very accurately here. I can 6 centimeter की arc खोलेंगे and then yes, 6 centimeters की arc बना दें, पूरा circle बनाना चाहते हैं, that's also fine. It's going to look something like this. या आपने let's say circle बना दिया. Let's say this is what it looks like with E as the center. ठीक है, हमें सिर्फ किससे कंसर्न है, सिर्फ अंदर वाले पार्ट से, ट्रायंगल के अंदर वाले पार्ट से. आप आर्क भी बना सकते हो, बाहर वाला पार्ट आप इरेज भी कर सकते हो if you want. This is what you have. 6 centimeters की आपने ये circular arc बना दी, ये circle बना दी E से, with E as the center. अच्छा, it's nearer to AF than it is to AE. मैं ख्याल शायद बड़ा सर्कल बन रहा होगा आपका, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ. Again, I'm not sure of the lengths here. मेरे पास ये digital form में है, I can't measure the lengths. So let's say इस तरह का आपको ये सर्कल बनेगा. ठीक है, अच्छा, nearer to AF than to AE. जब दो लाइंस की बात होती है, we have AF line and we've got AE line, तो हम किसके Angle हमेशा bisector. क्यों, sorry, angle bisector. angle bisector, Angle exactly. bisector. Yes, so when we're dealing with two lines, we make angle bisector. Angle bisector बनाते हैं यहाँ पे. कौन सी lines हैं? AF and AE. AF and AE. So the angle bisector, आपको पता है किस तरह बनाते हैं, right? आप A पे अपना compass रखोगे, we'll make one arc here, one arc on this side. फिर अपना compass यहाँ पे रखोगे, we'll make one arc in the middle here. आप compass इधर रखोगे, make one arc on right here. और आप इसको point A से join कर दोगे, right? So you know how to make angle bisectors, right? ये आपके पास angle bisector बन गया, let's say. Yes. ठीक है, अच्छा, बाकी वो उस पे आते हैं, जो लेस देन ग्रेटर देन की बात हो रही है उस पे भी आते हैं. नियरर टू ए देन टू एफ. अच्छा, जब दो पॉइंट्स होते हैं, तो दो पॉइंट्स की बात हो रही तो क्या बनता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. Perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ए और एफ की बात हो रही है. अच्छा, ए और एफ, लेट्स मेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देयर. ए और एफ के दरम्यान में, अगेन यू नो हाउ टू मेक दिस, राइट?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने हाफ से ज्यादा कंपास खोलनी है, ए पे रखना है उसको, पहले ए पे रख के आपने एक आर्क ऊपर लगा देनी है, एक आर्क नीचे लगा देनी है, ठीक है। उतनी ही लेंथ खुली रहनी चाहिए, और आप क्या करोगे, एफ पे रखोगे, एक आर्क यहाँ पे लगा दोगे, एक आर्क यहाँ पे लगा दोगे। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करें, दोनों को एक्सटेंड कर दें, दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट एंड यू विल जस्ट जॉइन दीज टू आर्क्स देन, और आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, ठीक है। Now let me make this approximately. Of course, it's not going to be very accurate because I don't have the tools. But let's try. Let it look something like this. Right. So this could be your perpendicular bisector. Okay. अच्छा देखते हैं इसने क्या क्या कहा हुआ था, less than 6 centimeters from E. E से 6 सेंटीमीटर, E से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 6 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ओके 6 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, यानी कि आप इस सर्कल के अंदर हो सकते हो, इस सर्कल के बाहर नहीं जा सकते। E से जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर से कम का मतलब है सर्कल के आपने अंदर रहना है, तो सर्कल के अंदर अंदर हो सकते हो, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते। Nearer to AF than to AE, AF के करीब और AE से दूर। ये जो एंगल बाइसेक्टर हमने बनाया था, इसके जो लेफ्ट पे लाइन पे रीजन है वो AE के करीब है, जिसके राइट पे रीजन है वो AF के करीब है, राइट। हमें क्या करना है, वी हैव टू बी नियरर टू AF, AF से नियरर होगा इसके नीचे वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव नियरर टू A than to F। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, नीचे वाला पार्ट A के करीब है, ऊपर वाला पार्ट F के करीब है, तो वी हैव टू बी बिलो दैट। So which region satisfies all of these conditions? That's this small region here for me. आपकी जो accurate figure है उस पर आप देखेंगे क्या आएगा, और it looks like this region for me, ठीक है। आपका साइज थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी फिगर कैसी है, but this is what the region is what we were asked about. Okay, is this clear? Yes, Okay, good. Let's move on. Let's try to be quick. Let's finish this. We have this table. The table below shows the summary of the times taken by 50 athletes to run 400 meters. So they're running 400 meters, and these are the times taken by them to run that much. Total 50 है, तो ये frequencies का sum total 50 होएगा. We can write that there. State the model class. Model class कौन सी होगी, इसमें frequency सबसे ज़्यादा है. That's this. Frequencies ये class कौन सी है? That's from 55 to 60. We just write that class here. 55 and 60 के दरम्यान वाली class, जिसकी frequency सबसे ज़्यादा है. Frequency नहीं लिखनी वहाँ पे, 16 नहीं लिखना, आपने वो class लिखनी है. Model class. That's 55 to 60 वाली class. Calculate an estimate of the mean time taken. So we have done this multiple times. अब क्या करोगे, midpoint find करोगे, 52.5, 57.5, 62.5, 67.5, right, 72.5. Let's call this x. ये हमारा x है. Frequencies नीचे आ रही हैं. fx figure out कर लेते हैं. ठीक है, इनको multiply कर देते हैं. 52.5 and 52.5 into 7. What's that? That's 367.5. इस तरह से सारे evaluate कर लें, ठीक है, इनको add कर देंगे, total कर देंगे इनको, वो हमारा हो जाएगा sigma fx. ये क्या था? This was sigma f. Mean is just going to be sigma fx divided by sigma f, right? You can do this after this, right? We've done this in a number of papers before as well. ये हो जाएगा? Mean calculate हो जाएगा? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, so let's move on. Yeah, let's skip this and let's move on. So mean आप calculate कर लेंगे. अच्छा, then it says calculate the probability that an athlete chosen at random took less than 60 seconds to run the 400 meters. Probability that an athlete chosen at random took less than 60 seconds. अच्छा, ऊपर जाते हैं, times कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? 50 से लेकर 75 तक. Less than 60. Less than 60 का क्या मतलब है?
इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, राइट? 50 से 55 वाली क्लास हो सकती है, 55 से 60 वाली क्लास हो सकती है, इन दोनों में से कुछ हो सकता है। रैंडमली हमने चूज किया है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 50। 50 में से कितने सेटिस्फाई करते हैं हमारी कंडीशन को? 7 and 16 टोटल, वो कितना आ गया? दैट्स 23 over 50. That's the probability, 23 divided by 50. All right, ये clear है? Yes, sir. Okay, let's move on. The cumulative frequency curve summarizes the time taken by 80 boys to run 200 meters. So we have this cumulative frequency curve, 80 boys in total, right? देखिए 80 तक जा रही है curve आपकी vertically, 200 meters run करने के times and के जो 25 से start हो गया 45 तक जा रहे हैं, ठीक है? Find the median time. Median time. Median में क्या करते थे? Vertically देखें कितना है? 80 का 50% या 80 का half, that's 40. 40 पे जाके हम देखेंगे हमारी कर्व कहाँ पे मीट करती है? 40 पे जाके ये हमारा पॉइंट आ गया, ये हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे जाके व्हाट डू वी गेट? We get 34 here. So that's our median. That's 34. That is the median. Yes, very good. Manal, that's correct. That's 34. So 80 का half किया, 40 पे गए, 40 पे से corresponding value देख ली, and we read that that is our median, 34. Then it says find the interquartile range. Upper quartile चाहिए, lower quartile चाहिए. तो 80 का 75% या फिर हम ये भी करते थे 80 into 3 over 4, that's going to be 60. 80 into 1 over 4, that's going to be 20. अब ये 20 और 60 आपके upper quartile lower quartiles नहीं है, हमने इनकी corresponding values देखनी है जाके, ठीक है? So you've got this value here, that is your upper quartile, which is how much? It's 36.5. This is your upper quartile. Then you look at the lower quartile as well. 20 पे जाके देखते हैं, that's this value, and on this side we get 32, right? That's your lower quartile. Interquartile range क्या होती है? Upper quartile minus the lower quartile. That's 36.5 minus 32, and that is 4.5. ठीक है? ये हमारे पास आ गया 4.5. That is the interquartile range. Okay. Achha, 60 girls also ran 200 meters. So the data that we had there, that was for boys. Now we have 60 girls who ran 200 meters. The girl who took the longest time ran 200 meters in 40 seconds. And the girl who took the shortest time ran 200 meters in 28 seconds. The lower quartile for the boys and the girls is the same. So lower quartile wahi hai. The interquartile range for the girls is 4 seconds. अच्छा, lower quartile same है, क्या मतलब है? Lower quartile क्या निकाला? That was 32. तो interquartile range है वो 4 seconds क्या है? अच्छा 4 seconds है. So ये lower quartile था, तो upper quartile क्या हो जाएगा फिर? 32 plus 4. That will be the upper quartile, right? Because interquartile range क्या होती है? इन दोनों का difference होती है. अगर interquartile range 4 है और आपको lower quartile पता है, that's 32, जो boys वाला था, तो आप वहां से upper quartile निकाल सकते हो. ठीक है? Now given this information, you have to draw the cumulative frequency curve on this grid that's given above. इसी grid के ऊपर आपने cumulative frequency curve for girls बनानी है. अच्छा देखिए important points कौन से हैं जो उसने point दिया हुए हैं. The longest time ran 200 meters in 40 seconds. 60 total है, right? 60 total है. क्या? Okay, so we have 60 in total. ठीक है? तो क्या मतलब हुआ? 40 seconds के against, जो हमारा 40 seconds यहाँ पे time होगा, 40 seconds, वहां पे आपकी last जो आखिरी girl है, she took 40 seconds, right? तो 60th girl जो है, उसका time कितना होगा? 40. So एक point हमारे पास आ गया 40 and 60. यहाँ से हमारे पास point आ गया 40 and 60. And the shortest time one, 28 के ऊपर वो थी जिसने shortest time लिया, यानी the first girl थी वहां पे,
तो सबसे ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा? ग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा 0 सॉरी इट्स द अदर वे अराउंड, ग्राफ स्टार्ट हो रहा होगा 28 से। 28 से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और आप ऊपर जो है कहां तक जाओगे? यू विल गो until top there, that was 40 and 60, 28 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट, राइट? Let me use a different color there. That's 28 0, and then 40 60, 40 के ऊपर 60, that's this point here. ये आपके highest और minimum points आ गए। अच्छा, then it says lower quartile. Lower quartile girls का अब टोटल कितनी है? 60। लोअर क्वार्टाइल किस नंबर पे होना चाहिए? 60 into 1/4, that's 15। तो जब लोअर क्वार्टाइल 32 के ऊपर है, इसका मतलब है 32 टाइम कब आ रहा है? जब आपके पास 15 ऊपर गर्ल्स आ रही है, ठीक है। ये आपके पास एक और पॉइंट आ गया। इसी तरह से अपर क्वार्टाइल क्या है? 36, वो कब आ रहा है? अपर क्वार्टाइल 36 पे आ रहा है, सो 60 का आप 3/4 करें, 60 into 3/4, that gives you 45। तो 36 corresponds to 45। 45th girl जो है that takes around 36 seconds। यहां से आपके पास दो और पॉइंट्स आ गए। 32 पे 15, 32 पे 15, so that's this point here, and 36 पे 45, 36 पे 45, that's this point here। ये आपके पास 4 पॉइंट्स आगे, इनको यूज करके बस आपने एक कर्व बना देनी है। That looks similar to a cumulative frequency curve। Remember, हमारे पास वो किस तरह की शेप होती है जनरली cumulative frequency curve की? It's an S shape like this। उस तरह की शेप आपने यहाँ से बना देनी है इन पॉइंट्स के बीच से। That looks something like this। That's a cumulative frequency curve। Okay, does this make sense? Yes, sir. Okay। There's something wrong with my OneNote. So I think it's restarting or something. Okay। ये आपकी cumulative frequency curve बन गई। Now, okay, good। Let's move on। So then you have this one. It looks the relatively simpler one. So OAB is a sector of a circle, center O, and radius 10 centimeters. AOB is given to be 72 degrees. Angle nazar aa raha hai, see the point of the arc such that OC bisects AOB। OC bisects AOB क्या मतलब? बिल्कुल सेंटर में आ रही है। AOB जो एंगल है आपका, उसको बाइसेक्ट करिए, तो ये एंगल भी 36 होगा उसका हाफ, और ये एंगल भी 36 होगा उसका हाफ। So that's what it means to bisect। Radius 10 है, वो भी आपको नजर आ रहा है फिगर के ऊपर। Calculate the perimeter of the sector OAB। Perimeter का क्या मतलब होता है? Length of the boundary। दो तो इसके रेडियाई हैं, एक ऊपर रेडियस, एक लेफ्ट पे रेडियस, एक राइट पे रेडियस है। Then you have this arc। आपको सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। What you have to do is you just add those radii, that's 2 times the radius, 2r, plus the arc length। Arc length कितनी होगी? theta over 360 multiplied by 2 pi r। Okay, so let's just figure this out। 2 into 10, that's the radius, plus theta, that was 72, divided by 360 multiplied by 2 into pi into 10। ये आप evaluate कर लेंगे, that's 20 plus something here, 72 divided by 360 multiplied by 2 into pi into 10, that is 12.57। So the perimeter turns out to be 32.6 centimeters। That's the perimeter। Okay, रेडियाई को ऐड कर लिया दोनों को, आर्क लेंथ में ऐड कर दी।
It says calculate the area of the sector OAB. पूरे sector के area निकालना है. So we know the formula for that. That's theta over 360 multiplied by pi r square. So that's 72 divided by 360 multiplied by pi into 10 ka square. Right, so just simple application of the formula. You can see what you get from that. That's 100 pi into 72 divided by 360, which is 62.83. 62.83 centimeters square. Right, that's the area of the sector. Then it says calculate the total shaded area. Shaded area निकालना है. अब shaded कौन सा part है? उस sector के अंदर से ये दोनों ट्राइंगल्स माइनस करनी है. बस ये नीचे वाला शेडेड, ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला आ जाएगा. तो वी सबट्रैक्ट दीस टू ट्राइंगल्स फ्रॉम दैट. कौन सी ट्राइंगल्स? दीस ट्राइंगल्स दैट वी सी देयर, OAC एंड OCB. ये दोनों ट्राइंगल्स माइनस करनी है. राइट, तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लें. लेट्स cut this into half from there. We know this angle is 36. We know this length is also 10. Why? Because this is also the radius. OC में तो radius है ना, that's also going to be 10. So area of one of those triangles, how do you find that? Area of, let's say, this triangle, that's OAC. What is that going to be? Half into AB sine C, half into 10 into sine of the angle in the middle, that is 36 degrees. ठीक है? इस पे ये पूरे का इकट्ठा नहीं निकाल सकते because these are two triangles. It's not one triangle, these are two triangles. हम एक triangle के निकालेंगे, देखेंगे ये क्या आता है. Yeah, 50 into sine of 36, that gives me 29.339. 29.39. That's what you get from here. Minahil, because it says so in the question. It divides into half because it says OC bisects AOB. It's given in the question. Bisect क्या मतलब होता है? AOB एंगल की बात हो रही है. ऊपर देखें एंगल का साइन है. AOB जो एंगल था, ये पूरा एंगल, OC line that passes in the middle, it bisects that angle. Bisect का मतलब है दोनों को equal half में divide कर देती है. It's given in the question. Okay. All right. So we have this area of one triangle. Shaded area क्या हो जाएगा फिर? Shaded area is going to be area of the sector, that was 62.83, minus the areas of those two triangles, so minus 2 into 29.39. That will give you your result. Okay, and that turns out to be 4.05 for me. 4.05 centimeters square. Okay. All right. So that's the shaded area. Sector में से हमने क्या किया? दोनों triangles को subtract कर दिया. Let's move on. अच्छा, अब वो जो point C था वो move होके यहाँ पे आ गया. D एक और point आ गया हमारे पास. Now it's no longer bisecting. अब वो angle equal नहीं है दोनों sides के ऊपर. So D is the point of the arc AB such that AOD. अच्छा देखो उससे क्या क्या हुआ है? The angle AOD, this angle, ratio angle DOB, that's the other angle on the other side, is 1:2. क्या मतलब? अगर ये पूरा angle 3 है, अगर पूरा angle 3 होता तो 1 part ये है और 2 parts ये हैं. ठीक है? Or you can say this is 1/3 of 72, 1/3 of 72, or this is 2/3 of 72. आप वो दोनों angles यहाँ से निकाल सकते हो. Now, Gavin says that the shaded area on the diagram, on this diagram, is the same as the shaded area calculated in part B2. Is he correct? Is he correct or not correct? Let's figure this out. ठीक है? यहाँ पे देखते हैं. हमने पहले क्या क्या कर लिया हुआ है? We have the area of the sector. Okay. Area of sector तो हमारे पास वही है. Sector तो वही है. Sector is not changed. वो कह रहे हैं कि shaded region दोनों के same है. ठीक है. हम यहाँ पे angles लिख लेते हैं पहले. Remember 1/3 and 2/3. आप ये निकालेंगे 72 के 1/3 और 2/3. You will get those two angles. 72 का 1/3 क्या आएगा? That will be 24 degrees. 72 का 2/3 क्या होगा? That will be 48 degrees. जब बस angles आ जाएंगे. अब आपको simply क्या करना है?
find the areas of these triangles. So area of triangle OAD निकाल लें या बस कुछ आ जाएगा area of triangle OBD निकाल लें ठीक है OAD और OBD निकाल लें that's half into 10 into 10 remember radius तो वही है तो में एक में angle 24 degrees आ रहा है so that's sine 24 and the other one is half into 10 into 10 into sine of 48 and you get something from here as well. So that is 50 into sine 24 which is 20.33 or 34 for me 20.34 and then 50 into sine of 48 that is 37.15 ठीक है यहां पे shaded area क्या आ रहा है ये आप निकाल लो this shaded region is equal to that area of sector that was 62.83 minus 20.34 minus 37.15 दोनों triangles के areas को subtract करें इनमें से लेकिन क्या आता है 0.83 minus this and minus 20.34 this is 5.33 ये region हमारे पास आता है 5.33 ऊपर वाला region हमारे पास आ रहा था 4.05 so they're not equal it is not correct so he is wrong Gavin is wrong 5.33 that we're getting in this case is not equal to 4.05 that we were getting in the previous case. These shaded regions are not equal to each other. Okay? That's what we get here. And that is the end of this paper, right? So any questions on this? Is this clear to everyone? Any problems? So it went a bit longer than than I expected at least, but I hope this helped. If there are any questions, let me know. Otherwise, we will end it here. Any questions? Sir, हमने 1/3 क्यों किया था 72 Okay, so what does it say? इसने आपको बताया है A और D जो ये वाला एंगल था और ये जो दूसरे वाला एंगल था इनकी जो रेशियो है that is 1:2. इसका क्या मतलब है अगर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो 72 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो क्या आएगा 24 24 24 ठीक है A और D is 1 part D और B is 2 parts right तो अगर ये पहला 1 था दूसरा 2 है यानी कि अगर ये पहला 1/3 था दूसरा 2/3 होएगा टोटल 3 parts थे ना इसलिए हमने 3 से डिवाइड कर दिया so that 1/3 of 72 is 24 and 2/3 of 72 is 48 degrees okay Yes, sir. anything else okay so as I announced earlier we might miss a few classes in the next 3-4 days wherever it's possible for me I will announce in the group and we can do one otherwise we might be missing a few classes uske wajah se kya hoega in the next couple of weeks after this then we will have more frequent classes at least 6 days a week and ho sakta hai last week mein hum 7 days a week bhi kar dein to do as much as we can okay all right so that's it for today thank you very much for joining at this particular time we will start with the next paper in the next session inshallah whenever we are able to have that so I'll see you then okay so I'll be posting on the WhatsApp group whenever there's an update Allah Hafiz and see you again